सीजन गौतम गंभीर बीच में डाल देते थे उनको एज अ बॉलर. ही इज नॉट bowler kind of great. He's a good impact player. Dominate, we are asking about dominate player. A dominate player is someone जिसमें टीम सोचे कि यार मेरे को इसके 4 ओवर निकाल के खेलना है. 18 crore for Yuzvendra Chahal, I don't think so. Hello and welcome to IPL Fan Wars. आज का टॉपिक है who has been the most dominating bowler in the history of the IPL. Like you can also consider it to be like the best bowler or the bowler who has dominated the scene in the IPL, because we don't speak about bowlers that much, but today we will, and we'll discuss, we'll fight, and we'll try to get to a conclusion. So yes, we'll start with the KKR guy. Who do you think? So being a KKR fan, so I think for me, Sunil Narine has been one of the most dominant all-rounder and bowler in the history of IPL. Like since his debut in 2012, he has been performing outstanding for KKR, and he has been an essential part. Like उसको हमने इसमें यूज किया है, पावर प्ले में यूज किया, उसने परफॉर्म किया है. Like whatever the strategy they have come up with, मतलब उसको बैटिंग में डाला है, सब कुछ, and he has been very outstanding. And I think मतलब he is one of the most essential and most dominant spinner in the history of IPL. काफी ज्यादा रन्स नहीं खाए अपने, मतलब हाँ, but भी करते थे, बहुत ज्यादा रन खाए उन्होंने. मतलब their average is not that great as they, but still मतलब ऐसे the impact is too good. Like जैसे ओवर्स हमें गलाने की बात आ जाती है, ऐसा कुछ होता है तो पावर प्ले के टाइम पे वो आ जाते हैं. एंड मतलब इवन ड्यूरिंग डेथ ओवर, मतलब स्टिल मतलब ही इज स्टिल देयर लाइक एज एन ऑप्शन फॉर द कैप्टन. राइट, बट आई थिंक सुनील नारायण का फॉर्म अभी आया है. इतने टाइम से वो एज अ he's not the most dominant, he's one of the best bowlers in IPL history, but not the most नंबर ऑफ dominant. विकेट भी देखोगे तो ही इज द फोर्थ और थर्ड विकेट टेकर, One of the best bowlers in IPL history, no doubt. तो नहीं है, फोर्थ या फिफ्थ है. Amongst the top 5 we can say. Yeah. But see, he has been playing on Eden Gardens. You know, it is the smallest ground. हाँ. तो run तो आएंगे, and being Kolkata pitch, हाँ, of course, RCB also has a smaller ground. But still, I think, And being a spinner, do you think he is the greatest bowler? he is not the greatest, but he is not that bad. No one is saying he's bad. bad. But he He's is not the most dominant. Yeah, He he is has not to be the- about the most dominant. Do you think Sunil Narine is the most No, dominant bowler? but he is amongst the top 3, I'll say. So I think कुछ पर्पल कैप कभी जीते हैं सुनील नारायण कभी IPL में? Do you think that एक आधा सीजन हुआ होगा, I don't remember. जो भी है उन्हें 3 IPL टाइटल्स भी जीते हैं, बॉलिंग में विकेट्स में भी अच्छे, तो obviously no one can deny कि मतलब initially got into the system as a bowler, and then He's one of the most crucial parts of KKR as a batter, as a But bowler. obviously Not the most dominant, but yeah. Okay, all-rounder impact player. Yeah. Yes, Yes, he impact has player. been one of the most impactful player in the history. But being a spinner, I think one of the most dominant is मतलब. No, I think management backed Sunil Narine because उनकी बैटिंग भी है. But the If performance only is bowler actually अगर आप देखो तो Narine was not bad. bowling action में भी काफी सवाल हाँ, उठे, बॉलिंग yeah. उसमें भी उनको चकिंग की वजह से उनको काफी बोला गया था, उनको अपनी एक्शन चेंज करनी पड़ी, और उसके बाद उन्हें इतने विकेट्स नहीं ले पाए थे वो जब वो रिटर्न किए थे. उसका economy भी बहुत बढ़ गई थी. Economy हाँ, बहुत बढ़ गई थी. और अभी भी अगर आप देखोगे तो दे यूटिलाइज हिम एज अ बॉलर वेरी स्मार्टली. लाइक लास्ट सीजन गौतम गंभीर बीच में डाल देते थे उनको एज अ बॉलर. ही इज नॉट bowler kind of great. He's a good impact player. But I think he also gets wickets. मतलब ऐसे economy में भी but wickets. So Piyush Sharma also gets मतलब second highest wicket taker in the history. But then you also have to see how many runs he's giving and what time he's coming and getting the wicket. So I don't think that obviously he's the most dominant. But okay, let's move on. We can ask Rajdeep. For me, without any second thought, Yuzvendra Chahal. Yuzvendra Chahal ने हमारे लिए RCB के लिए 8 सीजन खेले हैं. जो भी ग्राउंड की बात हुई थी, he has played at Chinnaswamy. Chinnaswamy मतलब एक पेसर के लिए भी इतना खराब ग्राउंड है. As a bowler, as a spinner over there, he is the leading wicket taker in IPL history. वो बात को तो मैं हटा दूंगा. He has economy of 7 or 8. I guess 8 मुझे याद नहीं है ज़्यादा. 7 point something. 7 point something 8. But again, अगर मैं सिर्फ हमारे RCB को नहीं देखूंगा, लास्ट 3 साल वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे. And the first season he played at Rajasthan Royals, he was the purple cap winner, I guess. He has played only for 3 seasons in RR, and he's the second most leading wicket taker. Okay, so Yuzvendra Chahal, मुझे ऐसा लगता है he's the most effective bowler. But what has he won? Again, most dominant bowler. Trophies, पर उनका contribution हमेशा गेम में रहा है. Purple cap जीता है मतलब एक सीजन में.
अभी लास्ट 3 साल में उन्होंने जीता है, एंड अगेन इमरान ताहिर का ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है. He has got the most wickets. Okay, Like for RCB hasn't won any purple cap. I have to see. I don't remember. But again, he is a leading wicket taker. Again trophy, हाँ, again trophy की बात आती है. We are talking about the bowlers. अगर उसका impact नहीं होता, उसके stats खुद बोल रहे हैं यार. 8 से कम विकेट होंगे चिन्नस्वामी में. When we speak about the dominating bowler, something we need something to back it up as well. Like Narayan has IPL trophies, other players. Again, मेरे हिसाब I disagree with this. अगर एक प्लेयर की बात चल रहा है, ऐसा टीम नहीं. अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो कर रहा है. But you go and you see, you won't call Zlatan Ibrahimovic the greatest. Because he was not. But he has the goals, na then. Yes, as international goal, you will say that he is. but he has the most wickets in IPL history ना भाई. चिन्नस्वामी में अगर आप खेल रहे हो, 8 के नीचे ग्राउंड में लग रहे हो. उन्होंने जाने क्यों दिया? अरे भाई ये मैनेजमेंट का कॉल मैं नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, हमने जाने दिया, जो टीम ने उसको लिया उसमें भी उसने डोमिनेट किया. 3 सीजन में 60 विकेट है उसकी आरआर में. आरआर ने जाने दिया उसको, मतलब if he is so. बिकॉज 18 करोड़ कोई नहीं पे कर रहा था वहाँ पे. 18 करोड़ क्यों? वो तो ऑक्शन में भी. हाँ, तो ऑक्शन में ठीक है करके ले सकते थे. बट वहाँ पे रिटेंशन के लिए उन्होंने अपने यंगस्टर्स को देखा, एंड दैट इज ओके. टेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर he has been so good for RCB let him go. He has been so good for RR, like you said कि 3-4 सीजन में सेकंड हाईएस्ट विकेट वो लोग ना चैलेंजर वापस भी नहीं लिया. So because I think कि मतलब we all know that he takes wicket, he is very smart and everything, but he concedes run as well to start with, and then secondly he cannot. Like a spinner doesn't have that much impact in an IPL game. Like I disagree. I disagree with this. Okay, do you think that Piyush Chawla is the second best bowler in the history of the IPL? पीयूष चावला नॉट सेकंड बेस्ट, तो बट अमंग द टॉप 5. जैसे मैंने नारायण के लिए बोला, अगर आप स्पिनर की बात कर रहे हो, उनको रन्स तो पड़ेंगे. पीयूष चावला भी तो स्पिनर ही है. मैं वही बोल रहा हूँ, बट नारायण उसने पूरा डोमिनेट किया है. पीयूष चावला ने अलग अलग सीजन. पीयूष चावला ने तो डोमिनेट किया है, विकेट्स लिए हैं और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर. अगर आप विकेट्स के हिसाब से बस बोल रहे हो तो पीयूष चावला का इकोनॉमी आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता. आई गेस इट विल बी मोर देन 9 और समथिंग. या एक ही रन, एक ज्यादा उससे एक बहुत फर्क पड़ता है भाई. अरे हाँ, पीयूष चावला ने कौन से टीम्स के लिए खेला है ना? हाँ, आईपीएल ट्रॉफीज भी. बट चहल अकेले जाके कोई बॉलर तो ट्रॉफी नहीं जीता सकता है. हम बॉलर की बात कर रहे हैं. Like you said, I'll agree that Chahal is the best bowler in the IPL. If you agree that Piyush Chawla is the second best bowler in the IPL. No, it's okay. We can disagree, but मेरे हिसाब से और सबको पता है कि वो कितने लेवल पे इम्पैक्ट डाला है. Do you think that Chahal is? No, I think he is a very good player. I don't think he is. Who do you think is the best, most dominant bowler? I can just speak about Chahal. Because I don't see. Let's just we discuss for Sunil Narayan. If there's a super over, do you think you will give Chahal the last over? If there's a super over, you'll give the ball to. या आई विल गिव. अगर तुम मुझे बोल रहे हो, आई गिव. मुझे चहल अगर 10 रन खाता है, This is तो just 4 विकेट. देख, डोमिनेट, वी आर आस्किंग अबाउट डोमिनेट प्लेयर. अ डोमिनेट प्लेयर इज समवन जिसमें टीम सोचे कि यार मेरे को इसके 4 ओवर निकाल के खेलना है. जैसे राशिद के एवरी टीम मैनेजमेंट डिस्कस कि यार वो एक डोमिनेट बॉलर है. वो हमारी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. हम तुम जाओ ना भाई, तुम जाके मारो. मेरी बात सुनो भाई, तुम जाके मारो. डोमिनेट बॉलर में दम है ना, तुम मारो. तो तुमने उसको मारा, बहुत छक्के मारे, उसके करियर का अकाउंट में तुम हटा नहीं पाए, 8 के ऊपर लेके नहीं जा पाए, 200 विकेट वो ले गया. तुम मारने की कोशिश करते हो, सामने वाली टीम क्या सोचती है मुझे उससे फर्क नहीं है. मेरा बॉलर उसके अगेंस्ट जाके विकेट ले रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. ट्रू, बट अभी इसने भी पॉइंट मेंशन किया सुपर ओवर में. आई थिंक यू आर जस्ट अगेन वो तुम्हारा और मेरा अलग हो सकता है ना. Who is the better bowler, Rashid Khan or Yuzvendra? युजवेंद्र चहल एनी डे. In the history of IPL, any day. You will have Yuzvendra Chahal in the team. Any or day. Rashid Khan. एनी डे. Fair enough. वी कैन डिसएग्री. मुझे राशिद खान बहुत ही एवरेज लगते हैं, और राशिद खान ने लास्ट 3-4 सीजन में तो मुझे लगता नहीं कुछ. ही परफॉर्म्स विद द बैट. अगेन इफ यू आर कंपेयरिंग एज स्पिनर्स, युजवेंद्र चहल के करीब भी मुझे लगता नहीं. Miles ahead of Miles Yuzvendra ahead. Chahal when Yes, it comes true. to bowling at least. True. Leave him as a batter. I think Yuzvendra Chahal has been good, but we all have seen never got a chance for India in T20. T20 World Cup में भी थे, but squad में never एक भी गेम नहीं खिलाया. There is a reason, because Wherever the player has played, he has made an impact. He has picked the wickets. I'm That's it. saying that उनके साथ injustice हुआ है, क्योंकि 110%. सबने किया है. मतलब आरसी ने भी किया, आरआर ने भी किया, इंडियन नहीं. ने भी किया है. इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ मैं. हर टीम को उनको जिसको लिया उन्होंने उनको खिलाया. बस उनको छोड़ भी दिया. वो मैनेजमेंट का बहुत अलग हो सकता है. 18 करोड़ में शायद से कोई भी टीम नहीं बाय करना चाहिए. पंजाब ने लिया है. अगर वो इम्पैक्ट नहीं होता, कोई भी प्लेयर 18 करोड़ में एक स्पिनर के लिए अगर वो जा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ Punjab I think they have overpaid for Yuzvendra Chahal. I don't think so. It's totally 18 crore for Yuzvendra Chahal. I don't think so. It's deserving for that.
अगर same option if we would have gotten Rashid Khan if he was in the auction, I think 18 crore for Rashid Khan is way too much. 18 crore for Yuzvendra Chahal is the most overpaid. I wish to see Rashid Khan in RCB someday, so we can see कि हमारे पिचेस पे क्या I would like कि अगर वो परफॉर्म कर पाए, अगर वो ऐसे हमारे यहाँ पे आते हैं तो मैं चाहूंगा 200 या 250 विकेट ले ले, हमारे लिए खेल रहे हैं। अगर हमारे चिन्ना स्वामी में कोई बॉलर, हमेशा बॉलर्स की बैंड बचती है, वहां पे आके अगर कोई स्पिनर इतना डोमिनेट कर सकता है तो वी वुड लव टू सी। बट हम सिर्फ चिन्ना स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलर ओवरऑल देख रहा है। आईपीएल सिर्फ चिन्ना स्वामी, इसके लिए मैंने बोला राजस्थान में फर्स्ट सीजन 27 विकेट, लीडिंग विकेट टेकर, पर्पल कैप लेके गए 3 सीजन में 61। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरसीबी, आई एम टॉकिंग अबाउट युजवेंद्र चहल एज अ कंसिस्टेंट प्लेयर, बट मैं ऐसा डोमिनेट इन आईपीएल हिस्ट्री नहीं बोलूंगा। I don't think, मतलब I never saw him as a consistent player या any impactful player, to be very honest. He's better than Narayan for me any day. No comparison. I don't think so. Even I don't think so. He's better than Narayan. ठीक है, but the thing is with me and my personal problem with Yuzvendra Chahal is that no one has ever shown their faith on Yuzvendra Chahal. For some reason, like I know that he has the most wickets in the IPL, he has all the stats, but again we have to see that how are we getting those wickets. Like Piyush Chawla is second, and I have no disrespect to Piyush Chawla, he has been very good. We have seen, but spinners and dominating, we are speaking about him being a very dominating bowler, so I don't think he has ever been that dominating in the IPL. He has been good, okay, but yeah, let's move on. Who do you think is? For me, I think wearing this Mumbai jersey, people would feel I will take Bumrah's name, and that is obvious. But for me, I think I'm a follower for Mumbai Indians since 2007, and I have seen Lasith Malinga's role has been a huge in Mumbai Indians' fast bowling attack. He has faced Prime Callis, McCullum, ABD, the modern day legends Kohli, Prime Callis, McCullum and all, मतलब 2007-8 से आई एम टेलिंग कि वो उस टाइम पे बहुत पीक में थे, अर्ली 2000s में जो भी बैट्समैन थे उनके अगेंस्ट भी उसने बहुत अच्छा डोमिनेट किया है, हमारे लेजेंड्स, इंडियन लेजेंड्स के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा डोमिनेट किया है, एंड आई थिंक द होल डेकेड फॉर मुंबई इंडियंस ही इवन ग्रूम जसप्रीत बुमराह। सो लसित मलिंगा, बी इट इकोनॉमी, बी इट इन पावर प्ले, डेथ ओवर, सुपर ओवर, हमने देखा है मलिंगा हैज बीन अ फिनोमिनल पर्सन एंड अ बॉलर एंड हैज अ ह्यूज domination in IPL. I can agree. I think I can agree with that. That Malinga can be considered as one of the most dominating bowler, because he was like, when we speak about domination, we know that what kind of domination he had in the game. We know, like someone asked him that will you give Yuzi the ball for last 10 runs in a over, and obviously we won't, right? Like there are very less bowlers जिसको हम लोग bowling देंगे वो 10 ओवर निकालने के लिए, जैसे मलिंगा हो गया, बुमराह हो गया, या जो दूसरे अच्छे बॉलर। And Malinga has actually defended 9 runs in the 2019. 2019, yeah. He was not even in his prime. I guess we are downplaying spinners over here. हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना वो पेसर्स की कर रहे हैं। मलिंगा, बुमराह, मलिंगा इज अ लेजेंड। सुनील नारायण एज अ स्पिनर, उन्होंने मेडन सुपर ओवर निकाला है, मेडन विकेट्स में। तो वी आर जस्ट डाउन पहली बात ऑफ द स्पिनर्स। आईपीएल की बात करें, सेकेंडली हम बॉलर बोल रहे हैं, नो मैटर वो स्पिनर हो, पार्ट टाइमर हो या फास्ट बॉलर हो, बॉलर इज अ बॉलर, उसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। और मेरे को, we are not downplaying bowlers, like I said, I think Rashid Khan को I'll give the over. Maybe he is also a spinner. Any day. If I need to defend 10 runs, there are very few bowlers जिनको मैं over दूंगा, मतलब one will be Rashid Khan, and there are very few bowlers, like for now I think so Kuldeep is such a good form. I think अभी के form के लिए I think I'll give it to Kuldeep. So we are not downplaying any spinner or something. If I have to choose between Chahal and Kuldeep Yadav, I'll give it to Kuldeep Yadav. Being in the current form. We'll go ahead and we'll speak about Malinga being the most dominant. But do you have any more stats to back him? I think he is highest wicket taker. He has won 2 Highest times wicket taker for Mumbai. in Mumbai. Yeah. And he has won 2 times purple cap. So I believe no other there is a competition in between the name that we took right now. That Malinga, for me is I think the he has top won of the it for table. only one time, but I'm not sure. I think But only one. still, the economy is very good. The strike rate is very good. Overall, the average is very good. Sorry, not Yes, about strike and rate. 2 finals that he has played, he has an economy of less than 6. Imagine a person playing final and has a conceded less than 24 runs. So I think that also is very impactful, because we are seeing dominant. I think if you give the ball to Chahal, he'll give it to Pete, Chepauk, Page, and he'll concede more. Perfect. He told he has lower economy, lower average, and he has purple cap. You agreed?
The same thing I told. But domination दिया है. Contributed to winning But trophy. He has performance in IPL final. बात जाता है ट्रॉफीज पे. हमारी बात परफॉर्मेंस पे, अगर डोमिनेंट बॉलर या बॉलर पे है तो बॉलर पे ही रहनी चाहिए. अब किस करेक्ट और आप बैट्समैन पर्सपेक्टिव से देखोगे ही वुड बैट्समैन पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे कि उसको चाहल इजी लगता है या मलिंगा. आई डोंट थिंक वो चाहल बोलेगी. What do you think? Do you think that Malinga has been the Of most course, dominant? Malinga, matlab any day, like I have also been Malinga, following yeah. Mumbai and Prime, Jack Callis and McCallum, so I know matlab aise Malinga has been very great. The Yorker King, the slower ball, everything has Well, I done can it. agree at some point that Malinga, but being a CSK fan and not just CSK fan, I think Bravo is also somewhere there for me Yes. being the most dominating. Like we are speaking about wickets, we are speaking about purple cap, we are speaking about IPL I trophies. think Bravo is more looked as an all-rounder. But still he has the third highest I know, but still. and he has won 2 purple caps, being an all-rounder as well. I know, but his bowling is not very appreciated because Yeah. he's always considered more of a. I think his Bravo the bowler was not that appreciated Exactly. because of him being a West Indian and etc. Whatever it is, he has that aura in him being an all-rounder. He could have come and played also, but like I think from where I see the most dominating, it also includes titles. It also includes purple cap, Everything, and yeah, it it's a also package of includes everything, wickets. And I think this guy has all 3, and I think Malinga also has all 3. So for me, But for it would that be matter, between- even Sunil Narayana has all 3. yeah, even Sunil Narayana has all 3. Absolutely, even he has wickets. So I think it will be between the 3 Three of for them. now. Who do you think is I think only Lasik Malinga. Lasik Malinga will be there? So I think our panel Agrees. anyone from Punjab. The upcoming, I would say, Arshdeep is quite good. In the coming years, I hope if we concede. आप उनका भी नाम ले सकते थे मतलब. But, dominating की बात चल रही है पंजाब. But in the overall history, we have not done that great. की बात. Arshdeep, But even RCB has not won any trophies, but he thinks that. but Chahal has and, the highest wickets, and he has been playing consistently for so many years. After 3-4 years, if we have the same, Arshdeep will end his career, he'll have the most wickets. I think he will be in a much better position than he is currently. Of course, I'm not sure if he'll be the best, but he will be. But you don't expect him at the top 5. Top 3 to 4 ये years. age में he has become the leading wicket taker for India in international. Yes. So by the time he ends his career in IPL, he will be among the top 5 at least. ऐसा मुझे लगता है. For international, Bumrah से एकदा 89 wicket taker for India. But again, like I think a panel has decided because he has voted for Malinga, and all players are voting for their players. I think Malinga, which we can agree at some But I point. think, has but been- these are all just international bowlers. So maybe, we can also talk about the domestic bowlers. We can speak. I don't know why he didn't take Jasprit Bumrah's name. I don't know why some of you guys didn't. Because मैं take पूरी Bumrah's हिस्ट्री name. को कंसिडर कर रहा But he took Yuzvendra Chahal's name, so yeah, he has. But we can be honest over here, and we can say that obviously Malinga, Bravo, these guys have come up and won So trophies for their international bowlers have respective dominated more. Then even if you speak to Bumrah, No, he'll say I think, to be very honest, I think I'll put Bumrah over Malinga. But he didn't take. Bumrah was not in the contention only, so that's why we cannot speak about him. No one took No, I him. felt because Bumrah itself will speak that Malinga has groomed and has played a huge role in that. You So leave for, that what they want. but मैं हिस्ट्री को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है बुमराह को अभी भी बहुत ज्यादा जो बॉलिंग यूनिट उसके लोगों को बोलेगा कि यॉर्कर याद रहेगी कि उसने यॉर्कर फेंकी है. And क्योंकि starting speak to batsmen, was very inconsistent. उनको बहुत ज्यादा रन करते थे, नो बॉल्स थी. जब मालिंगा भी स्टार्टिंग में आए रहेंगे तब But he, जब मुझे जहाँ से याद है IPL में from start he has been a very good bowler. Absolutely. बुमराह मलिंगा जब आया था वो टेस्ट भी खेल रहा था, वो ओडीआई भी खेल रहा था. ही वाज अ प्रॉपर कैप्ड प्लेयर बाय महिला जयवर्धन. बुमराह को आईपीएल के बाद ही पीपल सॉ दैट ओके लेट्स गिव हिम. इसका कोई सेंस थोड़ी ना, मतलब नहीं, आप मतलब बुमराह कि वो आईपीएल में मतलब तो बुमराह के पास कम कॉन्फिडेंस रहेगा. कम confidence वही बोल रहा हूं, मतलब कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड Exactly, yeah. उसको कैप होना वेरी मच डिपेंडेड ऑन अपॉन हिज परफॉर्मेंस इन आईपीएल. And now, if you ask Malinga also, I think he'll say that. He'll say Bumrah, definitely. मैं दिल से मैं भी बुमराह ही बोल रहा हूँ, बट if we see the overall history, I think Malinga played a huge. I would have liked to see Pakistani bowlers in IPL, but it didn't. अच्छी बात. ठीक है. So guys, please let us know who do you think has been the most dominant / the best bowler in the history of the IPL in the comment section, and
Like, subscribe, share our videos. Thank you. This podcast was sponsored by Dafa News. Follow us for more such interesting videos.